गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें फोर्थ टेस्ट अराउंड 50 एमसीक्यूज रो आंसर एंड एक्सप्लेनेशन आज हमें डिस्कस करिबा। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन सेशन लेट मी बी क्लियर कि ऑडियो एंड स्क्रीन रे जो पीडीएफ टा रही एंड मु एठी जहाँ भी लिखुची एनोटेट करूची से सब क्लियर अच्छी कि नहीं। एनी वन ऑफ यू जी भी लाइव चैट रे ऑनलाइन अछंती से माने केही जणे तम मनक भितरु कुहंतु कि ऑडियो आ वीडियो क्लियर अछि कि नहीं। ऑडियो आ वीडियो क्लियर अछि कि नहीं। एनी वन ऑफ यू टेल मी इन द लाइव चैट। ओके ठीक अछि। तो आज में आमे मॉक टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करिबा। आ ए मॉक टेस्ट रे 50 टा क्वेश्चन अछि, 50 एमसीक्यूज। बहुत इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल रो क्वेश्चन देखिया को मिलिबो। जो गुडी को फैक्चुअल अछि जहा पछरे एतरा भी कांसेप्ट नाही, जो गुडी का आपनकर नोट्स रे डायरेक्टली मेंशन हेची आ स्टैंडर्ड बुक्स रे डायरेक्टली मेंशन हेची। तारा एक्सप्लेनेशन हमें जस्ट डिस्कस करके आगु को बढ़िबा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आ जो थरे टिके कांसेप्ट्स इन्वॉल्व अछि ताकू टिके 1 to 2 मिनिट्स ताकू डिस्कस करबा को नबा। एंड जहाँ भी एठी पॉइंटर्स बा एक्सप्लेनेशन रे जदी एमिति किसी जिंस अछि कि क्वेश्चन रे एमिति किसी डेटा अछि जोटा कि नोट्स रे कि स्टैंडर्ड बुक्स रे इंक्लूड नाही, देन मु एडवाइस करिबी कि समस्त पेन एंड पेपर कॉपी नै की बसंतु। एंड जहाँ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लागिबो जोटा कि आपन स्टैंडर्ड सोर्सेस से नाही, यू कैन नोट देम डाउन। एंड पर क्वेश्चन मु 10 to 15 सेकेंड्स रो टाइम देबी समस्त को अटेम्प्ट करिवा पई। एंड समस्ते ए टाइम फ्रेम भितरे लाइव चैट रे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिवे। ओके फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन अछि, एथरे किछि बुझिबार नै। जो माने लक्ष्मीकांत बा तांकर निजरो नोट्स क्लास नोट्स सब रिवाइज करिथिबे से माने जानिथिबे। एज इट इज क्वेश्चन देइछि द वर्ड्स जो सोशलिस्ट और सेक्युलर ए जो दीटा वर्ड रहिला, they were added to the preamble of the constitution through which constitutional amendment। को constitutional amendment act through रू preamble रे ए दुईटी वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड हेछि। 38th 42nd 44th or 52nd। your time starts now, you have 10 seconds to answer। this is a very easy question, so I am giving 10 seconds। your 10 seconds starts now। करेक्ट आंसर वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हमें आउ कोन कहिताउ, आकु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहिताउ। कहीं ना ये कॉन्स्टिट्यूशन रे अमेंडमेंट थ्रू रू बहुत गुडे चेंजेस आनिथिला। आउ सेही चेंजेस भितरु एटा गोटे कि दीटा वर्ड जो सोशलिस्ट और सेक्युलर एठी देखुजो, तो सेटा प्रिएम्बल रे थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड हेतला। सो आंसर कोन बा, आंसर विल बी बी।
Number 2, the preamble of Indian Constitution draw its inspiration primarily from which of the following historical documents? आ भितरु को historical documents रु आमर Indian Constitution रो जो preamble टी रहिछि सिए तारा inspiration को draw करिछि माने it is based on that historical document. First, Magna Carta, then American Declaration of Independence, C, Nehru's Objective Resolution, then D, Irish Constitution. 10 seconds ଦଉଛି ମୁଁ 10 seconds starts now. Very good. ସମସ୍ତେ correct answer ଦଉଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଦଉଛନ୍ତି ନେହେରୁ's objective resolution. ଠିକ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ preamble ଟି ରହିଲା ସେଟା based ହେଇଛି on the objective resolutions moved by Jawaharlal Nehru in 1947. Answer କଣ ବା answer ହବ C. The phrase "We the people of India" reflect which of the following constitutional principles? Rule of law, popular sovereignty, federal supremacy, or representative monarchy. आम preamble रे समस्ते एटी रिकॉल करि परथियो we the people of India ए फ्रेज टा कोठी यूज हेछि preamble रे यूज हेछि तो ए जो फ्रेज टा को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करूची फर्स्ट रूल ऑफ लॉ बा पॉपुलर सोवरेंटी फेडरल सुप्रीमेसी की रिप्रेजेंटेटिव मोनार्की 10 seconds दउची मो आंसर अब बी पॉपुलर सोवरेंटी पॉपुलर सोवरेंटी माने कोन वी द पीपल ऑफ इंडिया हमर प्रिएम्बल रे ए जो पार्ट टा रहिला ठीक अछि एटा तार अथॉरिटी डिराइव करूची एटा कहूची कि हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि it derives its authority from the people of India माने एठी लोक माने कोन होचंदी ए माने होचंदी सोर्स ओके नॉट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल और हायर पावर ये ताकर तार अथॉरिटी लोक मानक ठारू ही डिराइव करूची दैट इज पॉपुलर सोवरेंटी Question number 4. Which of the following ideals in the preamble was inspired by the French Revolution? Justice, sovereignty, liberty, equality, fraternity and republic. एठी किछिटा ideals listed अछि कहिछि कि चारोटी ideal भितरु आम preamble रे को एमिति को ideal टा ई चारटा भितरु जोटा कि inspire हेछि from the French Revolution. 10 seconds starts now. आंसर हम सी लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी एटा डिराइव हेछि हमर फ्रेंच रेवोल्यूशन रु ओके सो आंसर कोन बा आंसर बा सी लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वर डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आ फ्रेंच रेवोल्यूशन हेतिला केबे 1789 Fifth question, the preamble was amended for the first and only time in the year of 1973, 1975, 1976. Good second.
और 1978 ऊपर आमे गोटे क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी करि सारलेनी प्रिएम्बल रा अमेंडमेंट विषय रे एंड को दीटा वर्ड भी ऐड हेछि तो सेइठू समस्ते इथि आंसर करि परिबे 1973 कि 1975 1976 कि 1978 10 सेकंड्स दोछि मु एक्सक्यूज मी आंसर अब 1976 1976 कोन 42nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे कोन हेतला तीनिटा नुवा टर्म बा वर्ड ऐड हेतला प्रिएम्बल रे सेटा होची सोशलिस्ट एक्सक्यूज मी सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी ओके तो प्रिएम्बल एपर्यंत थरिए ही अमेंड हेछि सेटा भी 1976 रे तो आंसर अब सी 1976 वेरी गुड समस्ते ठीक आंसर दउछंती ओके व्हिच in which of the landmark judgment did the Supreme Court hold that preamble is a part of the Constitution? Berubari Union case, Golaknath case. अभी तो को अमेंडमेंट अभी तो को लैंडमार्क जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट एटा कहिला कि प्रिएम्बल होची कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट फर्स्ट बेरुबारी यूनियन केस देन गोलकनाथ केस केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस आंसर अब केशवानंद भारती केस 1973 रे सुप्रीम कोर्ट एटा कहिला सुप्रीम कोर्ट ruled that the preamble is an integral part of the constitution ठीक अछि एंड प्रिएम्बल जेहेतु गोटे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल को हमें अमेंड भी करि परिबा we can amend the preamble but without destroying the basic feature বা basic structure যাহু কুआ जाए of constitution okay seventh question berubari union case 1960 originally held that preamble is enforceable in a court of law preamble is not a part of the constitution preamble limits the amending power of the parliament preamble can override the constitutional provisions preamble is not a part of the constitution जो बेरुबारी केस थिला सेतरे सुप्रीम कोर्ट एटा रूल कला कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट नुहे बेरुबारी यूनियन केस के आसला 1960 रे दैट प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सेतिपाई प्रिएम्बल को हमें अमेंड भी करि परिबा नाही बट एटा को चेंज करा गला इन 1973 इन द केशवानंद भारती केस कि प्रिएम्बल इज an integral part of the constitution so it can be amended as well without destroying the basic structure of the constitution बुझियला
The term republic in the preamble signifies political equality of all citizens, supremacy of parliament, elected head of the state, decentralization of power. Preamble रे republic term रो हमें कौन signify करिथाउ बा कौन बुझिथाउ. First कहला political equality of all citizens, supremacy of parliament, then elected head of the state, then decentralization of power. ଏଠି ମୁଁ 10 seconds ଦଉଛି. Answer हबो C, elected head of the state. ओके रिपब्लिक माने होची कि जो आमर स्टेट रो जो हेड रहिले सी इलेक्ट हेबे नॉट हेरिडिटरी नॉट मोनार्क ओके आउ इलेक्टेड इलेक्शन के प्रकार थाए गोटे डायरेक्ट इलेक्शन थाए आ गोटे इनडायरेक्ट इलेक्शन थाए इलेक्टेड हेड आम स्टेट रो हेड किए प्रेसिडेंट ओके सो then answer about C, elected head of the state. Which of the following statement about secular character of the preamble is correct? It mandates a state religion, it ensures equal part and protection of all religions, it permits religious preference in legislation, it allows discrimination on the religious grounds. 10 seconds ଦଉଛି ମୁଁ answer କରିବାକୁ. सेक्युलर कहले आमे या बुझिताउ कि सबु जेते भी रिलीजियन अछंती गोटे कंट्री रे तांको समस्त को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस समस्त को इक्वल रेस्पेक्ट आउ प्रोटेक्शन दिया जिवो. सो सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द प्रिएम्बल एंश्योर्स इक्वल रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियंस. 10th question, the words unity and integrity of the nation were added to the preamble by ऊपर हमें a particular question टा discuss कर सचे. So 38th Amendment Act, 42nd Amendment Act, 44th Amendment Act or not added by any amendment. Unity और integrity of the nation एटा preamble रे को amendment act द्वारा एटा add करा जाइछे. आंसर हम 42nd Amendment Act 1976 रे यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ऐड करा गला प्रिएम्बल को कोद पई की टू एम्फसाइज नेशनल इंटीग्रेशन. To emphasize national integration. आउ को दीटा वर्ड ऐड हेची प्रिएम्बल रे along with this one गोटे होची socialist and secular. The Supreme Court reaffirmed in November 2024 that the inclusion of socialist and secular in the preamble is unconstitutional beyond Parliament's power, a valid and constitutional amendment pending judicial review. November 2024 रे Supreme Court कौन कहिछि socialist और secular को नेकी preamble रो कि सेटा unconstitutional कि Parliament power बाहरे सेटा कि valid और still constitutional amendment बा तार judicial review एपदा pending अछि.
आंसर हम गोटे वैलिड आउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. Then, next question. The preamble declares India to be a democratic republic, implying that all citizens directly participate in the governance. The president is appointed by the parliament. The ultimate power lies with the people. The judiciary is supreme. Democratic republic कहले हमें कौन बुझिताऊ कि सबु जक citizen से माने governance directly participate करिवे बा the president appoint कहा द्वारा हुंदी parliament द्वारा हुंदी. The ultimate power lies with the people or the judiciary is supreme. आंसर हम सी डेमोक्रेसी आउ रिपब्लिकनिज्म रिपब्लिक जहाँ को आम कही था ये दीटा जाक मिसिक एटा सिग्निफाई करूचंती कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी बा अल्टीमेट पावर जो रही ओके तो एटा कोठी कहा पाखरे रेस्ट करूची इट रेस्ट्स विथ द पीपल दे आर द सोर्स ऑफ पावर एंड एक्सरसाइज आउ पीपल एमाने कौन ना डायरेक्टली एक्सरसाइज करूना तांको पावर को they exercise through their representatives. So the ultimate power or authority lies with the people. Next question. Which of the following best describes legal status of the preamble? It is enforceable by the courts. It is a source of fundamental rights. It is a non-justiciable but aids the constitutional interpretation. It cannot be used for judicial interpretation. 15 seconds दोजी मु आपाई. आंसर हम सी प्रिएम्बल टा हूँ नॉन जस्टिसेबल माने एटा कोर्ट रे एनफोर्सेबल नुह it is not enforceable by the courts but aids the constitutional interpretation. Okay, प्रिएम्बल टा लीगली एनफोर्सेबल नुह किंतु गोटे इंटरप्रिटेटिव गाइड से प्रोवाइड करे फॉर द कोर्ट्स. Next question. Keswanand Bharati judgment 1973 used the preamble to strike down the 24th agreement, introduce the doctrine of the basic structure, grant parliament unlimited amending power, limit the judicial review. Keswanand Bharati judgment preamble को use करिके आ भितरु को जिनसटा रूल करथिला. Then first आमे कहिबा कि strike down the 24th amendment, introduce the doctrine of the basic structure, then grant the parliament unlimited amending power by limit करतला judicial review को. आंसर हम बी इंट्रोड्यूस करतला डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. प्रिएम्बल को यूज करिके से केशवानंद भारती केस रे कौन जजमेंट दिया जाइतला कि प्रिएम्बल इज अ पार्ट और an integral part of the constitution. Preamble constitution रे गोटे बहुत ही गोटे important part and जेहेतु से constitution रा part amendment ता ऊपर हेई परिबो but से amendment ता basic structure को hamper करू नथिबो constitution रा. So it introduced the doctrine of the basic structure of the constitution and parliament को एटा से रूल आउट हेतला कि इट लिमिट्स द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अनलिमिटेड पावर से किसी देई नतला. ठीक अछि. तो आंसर कोन बा बी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. The words socialist and secular were inserted into the preamble during whose prime ministership?
सोशलिस्ट और सेक्युलर जेतबेले प्रिएम्बल रे ऐड हैला सेतबेले किए थिले एटी मन रखिबे कि 1976 रे ऐड हेतला अंडर 47 40 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी राजीव गांधी आउ ए टाइम रे हमर किए थिले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आंसर अब सी Next question. The preamble acts as philosophical summary of the constitution because it enumerates detailed provision for governance. It outlines the objective and ideals underlying the entire constitution. It is enforceable as the fundamental rights. It provides a schedule for legislative powers. Very easy question. 10 seconds to answer karo. Answer अब B. प्रिएम्बल जहाँ भी आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडियल्स रहिला ऑब्जेक्टिव बा स्पिरिट रहिला ताकू एक्सप्रेस करूची ब्यूटीफुली सो इट सर्व एज द philosophical summary or identity or essence. It outlines the objectives and ideals underlying the entire constitution. Assertion reason question अछि assertion कहले कि preamble is an integral part of the constitution. Reason आरा कोन कि it provides the source of power to the legislature and the executive. Assertion and reason are true. R is correct explanation of A. Both assertion and reason are true. Kintu R reason ta correct explanation no assertion ra. Assertion true but reason is false. Assertion is false but reason is true. 15 seconds doji. Answer is C. Assertion टा true अछि किंतु reason तो obviously false अछि समस्त reason statements रो ही जानी जाइतिबे कहिना preamble constitution रो गोटे part किंतु सी legislative आउ executive power रो गोटे source नुहे. Question number 18. Consider the following statements. तीनटा statement देइछि आउ statement ऊपर correct option पचारछि. First, the preamble can be amended under Article 368. Any amendment destroying its basic structure is invalid. Preamble is key to Constitution's interpretation. First कहला preamble आर्टिकल 368 अंडर अमेंड हे परिबो. सेकंड स्टेटमेंट कोछि कि जहां भी अमेंडमेंट हबो जदि सेटा बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करूथिबो से ताहले से अमेंडमेंट इनवैलिड हे जिवो एंड द प्रिएम्बल इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशंस इंटरप्रिटेशन. ए तीनटा भितरु केतरा करेक्ट अछि गोटे दीटा कि तीनटा ऑल द थ्री बा नन. 10 seconds. Very easy question.
स्टेटमेंट 1 हमर करेक्ट अछि काना प्रिएम्बल अमेंड हेई परिबो आर्टिकल 368 अंडर रे आ एटा हमें कोड देखले केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 रे जोटा की सुप्रीम कोर्ट एटा ऑर्डर कले कि प्रिएम्बल सी कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे इंटीग्रल पार्ट आउ से आर्टिकल 368 अंडर रे अमेंड हेई परिबो एंड देन गोटिए ही थर प्रिएम्बल अमेंड हेइची हमर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 जोटी सोशलिस्ट सेक्युलर आउ इंटीग्रिटी ए तीनटा वर्ड ऐड हेइतला प्रिएम्बल रे स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट अछि एनी अमेंडमेंट डिस्ट्रॉइंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज इनवैलिड सेम केशवानंद भारती केस रे कहइतला कि अमेंडमेंट तो हबो किंतु जदी से अमेंडमेंट ता कॉन्स्टिट्यूशन रे किछटा बेसिक स्ट्रक्चर अछि बा बेसिक फीचर्स अछि ताकू जदी कॉन्ट्राडिक्ट करूथिबो ताकू जदी डिस्ट्रॉय करूथिबो ताहाले से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ता इनवैलिड हेजियो बा नल एंड वॉइड हेजिबो The second statement भी हमारा पूरा ठीक अछि the preamble is key to constitution's interpretation a particular sentence ऊपर भी हमें डिस्कस करी के आछे preamble गोटे गाइडिंग लाइट हिसाब रे सर्व करे आउ गोटे इंटरप्रिटेटिव टूल हिसाब रे भी सर्व करे in understanding the constitution okay and resolving the constitutional ambiguities तो तीनटा जाको स्टेटमेंट एठी ठीक अछि Next, assertion reason question. Preamble can be amended like any other part of the constitution. Then it is not a part of the basic structure of the constitution. कहला कि प्रिएम्बल जो बाकी पार्ट्स अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे तांको भली से अमेंड हेई परिबो देन रीजन होची इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 'आंसर अब सी assertion ट्रू अछि काइना प्रिएम्बल एठी हमें ऊपर भी देखिले कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पार्ट रोची जोटी का आर्टिकल 368 अंडर रे अमेंड हेई पारुची त प्रिएम्बल भी से हिसाब रे अमेंड हेई परिबो लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके रीजन कहि कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर किंतु प्रिएम्बल ले जहाँ भी फीचर्स रही जेमति कि सोशलिस्ट हे गला बा सेक्युलर हे गला कि रिपब्लिक हे गला ए सब जो एसेंस होची प्रिएम्बल ले दे फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू a constitutional amendment act ei sabu ideals को आपण चेंज करि परिबे नै so assertion true but reason is false 20th question which of the following is considered true measure of the country's national income gross national product at market price net national product at factor cost net domestic product at market price gross domestic product at factor cost कौन बार आंसर 15 सेकंड्स दोची मु अटेम्प्ट करिवा को आंसर अब बी net
national product at factor cost. सी total income जोटा कि नेशन रो जो रेसिडेंट्स माने जहाँ भी टोटल इनकम करूचंती जहाँ से माने टोटल इनकम करूचंती सेथिरु जदी डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर दिया जिवो बा डिडक्ट कर दिया जिवो डेप्रिसिएशन टैक्स और सब्सिडीज को ताहले एटा होची मोस्ट एक्यूरेट मेजर टू मेजर अ कंट्रीज नेशनल इनकम. तो आंसर कोन बा बी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट. 21 क्वेश्चन 21st क्वेश्चन जदि जीडीपी इतकी लाख क्रोर 300 लाख क्रोर एंड डेप्रिसिएशन 20 लाख क्रोर ताहले एनडीपी एनडीपी कोन हबो 320 280 300 और 260. एनडीपी कैलकुलेट करिवार गोटे फार्मूला अछि. पुट द फार्मूला. वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू जस्ट पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर. So I'm giving you 10 seconds for this. एनडीपी कैलकुलेट करिवार फार्मूला हला जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. ओके आउ जीडीपी एठी हमर केते थिला 300 लाख क्रोर माइनस डेप्रिसिएशन हमर केते 20. तो हमर आंसर केते भारिबो 280 लाख क्रोर माने ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is not included while calculating GDP at market price? जेतबेले हमें GDP को market price रे calculate करताऊ आ भितरु कोटा include हुएनी. First कहला government expenditure, then net exports, intermediate goods or private consumption. आंसर हम सी इंटरमीडिएट गुड्स को हमें काउंट करूना कहीं ना जेतेबेले आमे जीडीपी काउंट करी थाउ तो सेतेबेले ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ हेची फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ताकू ही काउंट करता. जदि इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट कर दिया जीवो ना ताहले कोन हबो ना सेटा एंड रे डबल काउंटिंग हे जीवो. सो टू अवॉइड दिस थिंग डबल काउंटिंग को अवॉइड करिया पाई कि हमें इंटरमीडिएट गुड्स को से प्रोसेस थ्रू रो काउंट करूना ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस तांकर वैल्यू को ही काउंट करा जाए. तो आंसर विल बी सी इंटरमीडिएट गुड्स. 23rd question in the context of national income factor cost differs from the market price because it excludes indirect tax and includes the subsidies, includes the indirect tax but excludes the subsidies, include only government expenditure, includes depreciation. आंसर हम फैक्टर कॉस्ट को हमें केमिति कैलकुलेट करता हूँ. फैक्टर कॉस्ट होची मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. तो एटा होची फार्मूला फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करिवार. तो एटी फार्मूला संगे देखिबा कि मार्केट प्राइस रु आमे कोन करूचे डिडक्ट करूचे इनडायरेक्ट टैक्सेस को किंतु सब्सिडीज को आमे ऐड करूचे. एक्सक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंक्लूड्स द सब्सिडीज. 24th, the difference between the GNP and the GDP is net exports, net factor income from abroad, depreciation or indirect taxes. आंसर हम बी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. जीडीपी और जीएनपी भितर आमर ए डिफरेंसटा रहिला कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड रो. फर्स्ट ऑफ ऑल जीएनपी हमें केमती कैलकुलेट करताऊ जीडीपी जीडीपी रे जदी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दिया जिवो देन इट विल गिव जीएनपी. व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड?
अब्रोड रे आमर जो माने काम करूचंती जो सिटीजन माने तांकर इनकम माइनस एठी जो फॉरेनर्स माने काम करूचंती तांकर इनकम इनकम पेड टू द फॉरेनर्स एटा जदि आमे डिडक्ट कर दबा ताहाले हमकु मिल जिवो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नेट तो सेई पर्टिकुलर जिंस को जदि आमे जीडीपी रे ऐड कर दबा देन हमकु जीएनपी मिल जिवो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट The term national income at constant prices indicates income adjusted for inflation, current market value, nominal GDP, income including depreciation. Answer is A. Income adjusted to inflation. जो constant price हमरो रही constant price it measures the constant price रो जो measure रही it eliminates the inflation. जहाँ फल कि real growth reflect हुए. Answer अब A. 26. The production method of national income estimation is most suitable for which sector? Agriculture, government services, trade or real estate? Answer अब A. कहीं जो production method आमर रही एटा होची most suitable for the tangible output. जेमती आमर agriculture हैला manufacturing. Answer एटी कौन अब agriculture. Which of the following correctly represents the expenditure method of the GDP calculation? C plus I plus G, just read this, C plus I plus G X minus M, then WRIP, output minus intermediate consumption, personal income minus direct taxes. GDP calculate karibar expenditure method रे गोटे formula अछि, just identify the formula from these four options. Answer अब C plus I plus G X minus M. It is GDP at market price. केमती calculate करा जाए? C for कौन? Consumption plus investment. I for investment. Then what is G? Government expenditure. And bracket रे कौन रहिला? X minus M. एठी X minus M कौन? The X minus M is net exports. In India, national income is estimated by Niti Aayog, Ministry of Finance, National Statistical Office, Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, Reserve Bank of India. National income किए estimate करे? Very easy question. National Statistical Office, NSO. Which of the following items is included in the personal income but excluded from the national income? Corporate profits, undistributed profits, transfer payments or depreciation?
आंसर हम सी ट्रांसफर पेमेंट जो पर्सनल इनकम हमर रहिला सेटा इंक्लूड करूची ट्रांसफर पेमेंट को जेमती कि हमर पेंशन एंड सब्सिडीज not earned through the production. Which of the following is not a difficulty in measuring the national income in India? Large unorganized sector, double counting of intermediate goods, lack of depreciation data, high literacy rate. आ भितरु जेतबे national income measure होची इंडिया रे, which of the following is not a difficulty? एठू देखुथिबे कि जो हाई लिटरेसी रेट हाई और लो जस्ट फॉरगेट इट जो लिटरेसी रेट रहिला आरो किछि गोटे डायरेक्ट इंपैक्ट नाही इनकम एस्टिमेशन रे इनफॉर्मल और अनमोनेटाइज सेक्टर आर द रियल चैलेंजेस सो लिटरेसी रेट रो किछि भी डायरेक्ट सेमति किछि अवदान नाही इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम सो आंसर कोन बा हाई लिटरेसी रेट 31 per capita income of nation is calculated by NDP by total production, NNP at factor cost by total production, GDP by working population, GNP by total workforce. Per capita income calculate करिवार जो फॉर्मूला रही सेटा होची national income divided by total population. And what is national income? It is NNP at factor cost. NNP at factor cost ऊपरे discuss ହେଇची. तो आंसर कौन होगा? आंसर होगा B. The difference between nominal GDP and real GDP arises due to fiscal deficit, population growth, change in the price level or inflation, capital formation. Your 10 seconds starts now. नॉमिनल जीडीपी रे हमें कौन इंक्लूड करथो नॉमिनल जीडीपी रे इन्फ्लेशन इंक्लूड हेई थाए बट रियल जीडीपी रे कौन सेटा केमिति कैलकुलेट हुए गोटे कांस्टेंट बेस प्राइस को नेकी कैलकुलेट हुए सो इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो नॉमिनल और रियल रे कौन डिफरेंस अछि चेंज इन प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन रो डिफरेंस अछि 33 the green GDP just a second the green GDP concept accounts for GDP at constant prices, environmental degradation and the resource depletion, black market activities, inflation adjustment. Very easy question. Green GDP नारो ही जଣା पड़ जाउची कोन आंसर ठीक हबो एटा हबो बी ग्रीन जीडीपी केमिति कैलकुलेट करा जाय ग्रीन जीडीपी कैलकुलेटेड एज जीडीपी रु जदी एनवायरमेंटल कॉस्ट को माइनस कर दिया जिवो इट मेजर्स द सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर और ग्रीन जीडीपी which of the following statements about the income method of the national income estimation is correct it measures national income from the expenditure side it sums of wages rent interest and profits it includes the intermediate goods it ignores the factor income from abroad आंसर अब बी
जो इनकम मेथड टा हमर रहिला से टोटल इनकम जेते भी फैक्टर्स अछि प्रोडक्शन तांकर टोटल इनकम रो सम. According to 2025 data, India's GDP grew approximately by 5.4%, 6.5%, 7.8%, or 8.5%. The correct answer is C. एटा होची factual थिला. Current affairs based. एटारे सेमती किसी concept नहीं, but according to Ministry of Statistics and Program Implementation, जो real GDP growth रही ची. Real GDP growth for quarter 1 of 2025 और 26 एटा केते थिला 7.8% year on year basis रे एटा थिला. तो आंसर हो 7.8% और ऑप्शन नंबर C. Assertion: the value of all goods and services produced by Indian residents, whether in India or abroad, included in GNP. Reason होचे GNP measures income by the geographical boundary, not by ownership. आंसर हम सी. assertion is true कहीं ना जहाँ भी goods और services रो value अच्छी सर इंडियन रेसिडेंट्स माने इंडिया रे प्रोड्यूस करंतु कि अब्रोड रे प्रोड्यूस करंतु जो नेट इनकम हमें कैलकुलेट करूचे इट इज इंक्लूडेड इन द जीएनपी. सो assertion तो हमर एटी ठीक ही हो. जीएनपी मेजर्स इनकम बाय जियोग्राफिकल बाउंड्री. नो कहीं ना जो माने अब्रोड रे भी इनकम करूचने तांकर इनकम टा को भी तो कैलकुलेट होची ना जीएनपी रे. तो reason टा भूल ହେଇଯିବ. So assertion is true and reason is false. Consider the following statement: GDP at market price greater than GDP at factor cost if indirect taxes exceeds the subsidies. NNP at factor cost equals to NNP at market price minus indirect taxes plus subsidies. Depreciation is subtracted while moving from gross to net measures. अभी तो कितना statement correct है? Only one, only two, all the three or none? 37 रो आंसर हम सी मैं तीनटा जाक करेक्ट अच्छी कहीं ना जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऊपर हमें कैलकुलेट कले सेटा होची जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस रहिला सेटा इट इज ग्रेटर देन सब्सिडीज सेति पई कोन हबो जीडीपी एट मार्केट प्राइस सेटा ग्रेटर हबो देन द जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट. ठीक अछि. तो এটা ঠিক আছে. এনএনপি র উপরে আমি অলরেডি ফর্মুলা দেখি দিয়েছি. এনএনপি ফ্যাক্টর কস্ট হচ্ছে এনএনপি এট মার্কেট প্রাইস মাইনাস ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস প্লস সবসিডিজ. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରସ୍ ରୁ ଆମକୁ ନେଟ୍ କୁ ଯିବାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଡେପ୍ରିସିଏସନ କୁ ମାଇନସ କରୁ. ତ ଏଟା ବି କରେକ୍ଟ ଅଛି. 38. Assertion कौन कहला? National income at the factor cost represents the net factor earning of a country's residents. Reason होची it excludes depreciation, indirect taxes and transfer payments.
Answer is A. Both assertion and reason are true, but R is the correct explanation of A. NNP at factor cost से कौन करूची depreciation को it excludes the depreciation and taxes to reflect the actual factor income earned by the nationals. So assertion is correct और reason होची एटा सतरे एटा depreciation को exclude करूची indirect taxes and transfer payments. India's first silicon carbide SiC semiconductor plant was inaugurated in November 2025 in which city? Visakhapatnam, Bengaluru, Bhubaneswar or Hyderabad? And the answer कौन हबो? Our answer is C. Bhubaneswar. India's first silicon carbide semiconductor plant टा November 2025 रे भुवनेश्वर रे inaugurate ହେଇଛି which shows India's electronic self reliance and clean energy push. Which of the following cooperatives from India were recently included in the International Cooperative Alliance Global Top List? Amul and IFCO, NAFED and KRIBHCO, then Amul and NCDC, NDDB and NAFED. Answer is A. Amul and IFCO. They are recognized among the world's largest cooperatives. For their turnover and social impact. 41 COP30 National Adaptation Plan NAP released by India focuses primarily on rainwater harvesting and nuclear energy, heat wave resilience, coastal protection and renewable energy, desert expansion and industrial emissions, glacier management and river pollution. Answer is B. COP30 National Adaptation Plan जोटा इंडिया रिलीज करची से प्राइमरीली फोकस करूची हीट वेव रेजिलियंस कोस्टल प्रोटेक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी उपरे ओके आउ ए जो COP30 National Adaptation Plan it aligns with India's 2030 climate vision. The Meteor missile recently inducted into the Indian Air Force belong to which category? Indian Air Force रे बे recently जो Meteor missile टा include ହେଇची सेटा को category को belong करूची?
surface to air missile, beyond visual range air to air missile, short range cruise missile, anti tank guided missile. Answer is B, beyond visual range air to air missile. Which educational reform milestone was achieved under NEP 2020 in October 2025? NEP 2020 under रे आ भितरु को educational reform milestone टा achieve ହେଇଛି? First, launch of new national education policy draft. First batch of NEP aligned NCRT books released. Implementation of the 4-year UG framework nationwide. Introduction of the common university entrance test. Answer is B. NEP aligned NCRT textbook ଏବେ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି. India hosted G20 Agriculture Meet 2025 in which city? Hyderabad, New Delhi, Pune or Ahmedabad? 10 seconds starts now. Answerable B. New Delhi. Which of the following Indian cultural practices were recently included in the UNESCO Intangible Cultural Heritage list? Sorry. Your 10 seconds starts now. Indiaର କୋ କଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁନେସ୍କୋ ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ଲିଷ୍ଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଛି. ଆନ୍ସର ହବ ବି. କୁମ୍ଭ ମେଳା ଆଣ୍ଡ ୟୋଗା ମହୋତ୍ସବ ଆଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଲଚରାଲ ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ପାଇଁ ୟୁନେସ୍କୋର ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ଲିଷ୍ଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଛନ୍ତି. The FIDE World Chess Cup 2025 for which the anthem and logo were launched in 2025 October is scheduled to be hosted in Goa, Chennai, Delhi or Mumbai. आंसर हम ए ये जो इंटरनेशनल इवेंट ये गोवा रे होस्ट हम शोकेसिंग इंडियाज ग्रोइंग प्रोमिनेंस इन द ग्लोबल चेस. The AMO hospital scheme of Odisha, the government has allocated approximately 1200 crore, 2560 crores, 3388 crore or 5200 crore.
आंसर हम 3388 crore एटा 5 years रो स्कीम टा आउ एटार एम होची केमिति हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करा जिवो अक्रॉस ओडिशा Odisha's mobile veterinary units launched in October 2025 are known as Krushi Sevak Rath, Mukhyamantri Brahmayaman प्राणी चिकित्सा सेवा, पशु स्वास्थ्य योजना, ग्राम सेवा व्हीकल मिशन. आंसर बी मुख्यमंत्री भ्रमयमन प्राणी चिकित्सा सेवा and केतेटा units rolled out ହେଇଛି 181 such units. Okay, to provide mobile animal health care benefiting the farmers and the livestock. 49th question. Blue flag certification in October 2025 was awarded to which beach of Odisha? October 2025 रे को beach Odisha रो blue flag certification ताको मिलिला गोपालपुर, पुरी, तालसरी और चंद्रभागा. आंसर हम सी तालसारी बीच को मिलची ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एंड ए बीच टा कोडी छी बालेश्वर रे. Last question. Under the Special Development Council initiative, Odisha doubled funding for कौन? Backward industrial clusters, coastal zone development, tribal dominated districts, urban infrastructure projects. आंसर इज सी ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जो एसडीसी फंडिंग रहिला स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल रहिला से फंड तार जो फंडिंग एनहांसमेंट तार एम होची कि केमिति ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करा जिवो एंड लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट करा जिवो इन 9 की डिस्ट्रिक्ट्स. ओके तो आज आम 50टा क्वेश्चन ए मॉक टेस्ट मॉक पेपर रे जहाँ भी थिला आज आम सब कंप्लीट करिचे. बेसी एथि वन लाइनर एंड फैक्चुअल क्वेश्चन थिला एते किछि कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नथिला सो जल्दी सरी गला सेशन. आई होप समस्ते नोट डाउन करिथिबे जहाँ भी तांकर इन्फॉर्मेशन नोट्स बा बेसिक बुक्स रे नाही ताको ऐड करिवे जोटा कि लास्ट मिनिट रिवीजन पई बहुत हेल्पफुल रहइबो. ओके सो दैट इज इट फॉर टुडे. नेक्स्ट मॉक टेस्ट हमें नेक्स्ट वीक डिस्कस करबा. आई होप समस्ते मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करुथिबे. थैंक यू.